powerful film. And I don't know, I just want to understand what were you undergoing when you were filming and when you were there. The movement was so big, no? There were so many filmmakers. Yeah. I mean, as many stories were needed. What made me stay there? It came at a time when, I mean, that year had been so much full of despair, right? Actually, it pulled me in, the spirit of the farmers, really. It really pulled me in. And there were so many things little things, like in the film, I don't go into the rhetoric of why the farm laws and all so much. And I think that film is also very important. But for me, what was important was that it could have been anything. Of course, this was about land, which is a very basic thing. It's about land, right? It was not about them. They're like, what is the legacy we're going to leave for our future generations? So I never not heard. We are so much fighting for our, about us, that we are not thinking कि future generation के लिए क्या छोड़ना है, stuff like that. Please go ahead. Firstly, congratulations. I think that was such a brilliant film, and I think at so many points, क्योंकि हमारे काम के आसपास से बहुत लोग ऐसे करते कि अरे फिर से आप वही टाइम, I think it came alive in so many ways. And I think you highlighted, not in so much detail because I think you have learned that, but also like the class struggle between the landless laborers and the farmers who had land and all of that. So that was quite great. I have a very short question actually, more factual. क्योंकि मुझे BKU के बारे में ज़्यादा नहीं पता. I think I was more aware of how AIKs and all were working. Was that कि बहुत सारे shots में there was also like slogan around Lal Salam, Red Salute, which is a communist socialist slogan that is also used. तो वहाँ पे भी was there I would say a socialist understanding of what was happening, या फिर BKU भी काम करता है उन्हीं lines पे, जो समाजवाद की है सब lines पे. But these are, I mean, at least BKU Graha. So they are a very mature communities. Were actually telling people कि elections से कुछ नहीं होता है. You have to be, you have always to participate. You have to get things, because election भी होगा, हो सकता है आपने जिनके लिए वोट किया वो आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो परफॉर्म करेंगे आपके लिए. So you have to make sure that whoever is there, whether it's BJP or Congress or Akali Dal, that they are performing for you. So उनका emphasis बिल्कुल भी इस पे नहीं, इलेक्शन पे नहीं होता था कि अच्छा कांग्रेस को वोट करना है इस बार या आपको करना है. They're like कोई भी आए, we still have to work. What really made me, what struck me was, when they say कि हम अगर गरीब हो गए तो हम कैसे दान करेंगे. So one tenet is of Sikhism is to share, right? So if you're poor, how can you share? And that really touched me very deep. And they always said, we've come here, we are already victorious, we are just waiting for when it will be declared. And that was so interesting, that, we are already victorious, we've won. So it's a matter of time. So this was all very new experience. I mean, I've been in part of various resistances, etc. I've gone and shot also. I've been, with students and elsewhere. I've not made the film. I have a lot of material. So I had been shooting a lot of movements actually in the last 10 years. And when I came here, it was, so many times, like when I reached Chhattisgarh, 3 दिन में ही हम लोग को जेल में डाल दिया, like that. But here somehow, I think it's just a number of people, just a sheer number. My gaze is not religious, but what I understood is that, especially with Ugraha thing, they did not allow any religious stuff out there. Even the langars, the so-called langars, were not there on their side. Of course, they were there on Singhu and Tikri and all, but not on the Ugraha side. But what I felt there, that the religion, because the people are same, right? The lived philosophy of the religion, I saw it practiced there. I mean, there is so much wonderful things about that religion that I saw it practiced here. So it's really the lived philosophy, not so much, religious fundamentalism. For me, it definitely was, I wanted to look at the lived philosophy, because I felt it there. When we used to reach there, the first thing they would leave everything and, feed us or, give us chai. I could not have shot this film if I had to feed also, because I had no money, I had no funding in during the whole year. Nobody was interested in this protest.
I was applying to, for funding, but nobody was interested. We don't know how long it's going to take, and what is it about. If I had to feed my team also every day, I think I would have given up long time ago. But the food was, courtesy them, and we would go to their village and just say ki we are 5 people, who come. And they would adjust, acha, Nishtha will stay here, these boys will stay here, whatever. I mean, this kind of hospitality, I've not seen anywhere. Like, I mean, even, I used to tell that, I've been in UP, I was shooting Gulabi Gang for the longest time. वो एक बार भी किसी ने कभी चाय नहीं बोला, So this was, and इनके पास resources हैं. I'm just going to now turn this question into something else, and I found that the people were the most resourceful people. मैंने ऐसे सुना था, मतलब केस स्टडी भी मैंने देखा था, तो उसमें बताया गया था कि मोस्ट ऑफ द जो फंडिंग होता था, मतलब जो इकोनॉमिकली वो जो सब प्रोटेस्ट में, तो वो कनाडा से मतलब वो इकोनॉमी थोड़ा हेल्प होता था, तो इस पे थोड़ा तो वो होता था, वो सिंघू बॉर्डर पे होता. तो जैसे ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर आल्सो कि इस फिल्म में सब कुछ नहीं होगा. फिर जैसे कई लोग पूछते हैं कि आपने एक वो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है वो क्यों नहीं दिखाया, वो भी हुआ है, बट आई से कि दैट वाज एन एक्सेप्शन एक्चुअली, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इतने सारे लोग हो गए. मतलब एक टाइम पे तो दे वर अराउंड एटलीस्ट 500,000 पीपल ऑल टुगेदर, बट देयर वर हार्डली एनी हैरेसमेंट. आई मीन आई वाज आल्सो देयर एज अ वुमन, तो कुछ इस तरह से नहीं था. फिर वो केस हो ही गया, एक तो होना ही था. There was a time when all kinds of people had joined the movement, whether they were farmers or not, with their agenda. क्योंकि लगा कि अब इतना बड़ा हुआ है तो अब ले बाजी, मतलब एक ही साथ, तो they kind of climbed on the agenda of the farmers. कनाडा से पैसा आया था, ये सरकारी प्रोपेगेंडा है. कनाडा से पैसा आएगा क्यों नहीं? कनाडा में कितने सिख, कितने लोग रहते हैं कनाडा. आपका परिवार होगा वहाँ पे बाहर, तो परिवार भेजेगा ना. कनाडा से फंडिंग नहीं है. इंडियन पीपल से आपके परिवार में आपका छोटा भाई यहाँ पे होगा, वहाँ पे कमा रहे होंगे, तो आप भी देंगे. और दूसरी चीज जो वो बता रहे हैं, गुरुद्वारों का सिस्टम ही ऐसा होता है, लंगर के लिए आपको बाहर से जरूरत नहीं होती है. फार्मर्स जो होते हैं वो अपना जो खेती का है वो देते हैं गुरुद्वारों में. तो सिस्टम ही ऐसा होता है कि दूसरी लोग सोचते हैं कि ये लंगर में कैसे, पर वो रोज का चलता ही है. दूसरी चीज की नॉट इवन कैनेडा, जब हम लोग वहाँ पे जाते थे बॉर्डर्स में, इवन जो दिल्ली और हरियाणा के लोग थे, whether they were middle class family or whether they were farmers, कोई दूध ला रहा है, कोई खुद ही कंबल ला रहा है, क्योंकि सर्दियों में भी बारिश हुई तो बहुत अलग अलग आम जो लोग हैं वो भी सामान ला रहे थे. तो अगर आपका परिवार कनाडा में होगा तो वो क्यों नहीं भेजेगा, जब जो कोई जानता भी नहीं वो भी जाकर बांट रहे थे वहाँ पे. You said it must have so much material. What is that? Yeah, so what is pieces that you would like to have left in? I mean, I would have liked to develop more on their, especially their protests against the WTO. जो साइलो में मेरे पास फुटेज नहीं थी, पर जो साइलोज एक्चुअली यू गेट टू सी द, मतलब some protests were there, so they stopped those silos also. जो पंजाब में हो रहा था ना वो बहुत इंटरेस्टिंग था. टोल प्लाजा फ्री था 1 साल तक. तो ये सब डिटेल्स हैं जो है ना वो मेरे फिल्म पे मतलब है मेरे पास, मैंने शूट भी किया. उससे पहले 5 महीने शूट. हाँ, 5 महीने, और फिर ये 1-1.5 साल. तो हम लोग तो फ्री जाते थे ना. रिलायंस मॉल सभी उनके सामने भी. हाँ. और रिलायंस पेट्रोल पंप वहाँ पर भी प्रोटेस्ट. रिलायंस पेट्रोल पंप, रिलायंस मॉल, सब जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे. और जियो टावर बंद थे. जियो टावर भी बंद थे. तो बहुत सारी चीजें थी जो हमने शूट किए. ये सारी डिटेल मैं याद कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें थी. बट इट वुड हैव टू बी अ रियली लॉन्ग फिल्म. थोड़ा फिल्म से अगर ऊपर हटके इस मुद्दे पे सोचे तो मुझे थोड़ी सी कंसर्न होती है फार्मर्स को लेकर कि ये एक मतलब एक पीढ़ी है जिनको समझ है इस पर्टिकुलर लॉज को लेकर है जैसे. पर मैं सोचती हूँ कि क्या, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है ना, ये लॉज आने का डर तो कभी भी हो सकता है. लाइक आई एम जस्ट थिंकिंग नाउ द नेक्स्ट गवर्नमेंट, इफ दे कम, whether this government or any other government that comes, they'll come with more preparation. So I'm just thinking ki are the farmers really equipped to deal with this kind of a system, or
what will happen, like you know, leadership में क्या वो सच में इतनी पावर रहेगी ऐसा एक दोबारा कुछ करने की, या क्या होगा? Difficult to say. I mean, right. One thing I found, that everybody knew. I mean, they had been trained because ये meetings होती हैं और ये stage चलता है, तो सबको सब कुछ पता था. They were not an ignorant lot. Correct. So they were very aware about everything. सारे मुद्दे उनको पता थे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये नहीं था कि एक लीडर है और उनको नहीं पता है, पीछे भेड़चाल है, ऐसा नहीं था. उनको पता था. तो इन लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा है जिसमें इनकी मीटिंग्स होती हैं और सब कुछ ठीक से समझाते हैं और बताते हैं. जैसे उनका कहने का तरीका भी है, लाइक हाउ ही इज इवन लीडिंग देम थ्रू हीट एंड यू नो मॉनसून एंड एवरीथिंग. और वो कनेक्ट भी करते थे. हिस्टोरिकली हम लोग ऐसे बैठे थे, ऐसे किया था. तो वो एजुकेशन बहुत चलता रहता है. बल्कि वो कह रहे थे कि उग्राह जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला था कि ये थोड़ा लंबा चलना चाहिए क्योंकि हमें इतना अटेंशन नहीं मिलता है लोगों को. सो यू नो दिस वाज वन प्लेस दे हैड अ कैप्टिव ऑडियंस. सो दिस इज और चलेगा तो इसमें थोड़ा एजुकेशन भी होगा लोगों का. काफी सारी चीजें यू नो पीपल विल कम टू नो लर्न थ्रू दिस. और फिर फिल्में वगैरह भी शुरू. कोविड आने से डिस्टर्ब हो गया, लेकिन पहले तो फिल्म्स का सिस्टम भी चल रहा था. स्क्रीनिंग्स हो रही थी हर रात को और अलग अलग लोगों को बुला रहे थे. तो बहुत एक यूनिवर्सिटी की तरह एक माहौल हो गया था. What you're saying is that, I mean, the farmers are one side of the issue that, I mean, any other government comes, so you're right, this thing can be brought back. But the other side is us and the people, particularly the people who are genuinely not able to afford what they need. So the minimum support price, only when the government procures that produce, will it be given to people who actually need it. So we need to, in fact, have education and have understanding of this issue on the entire spectrum, rather than seeing it only as an issue of those who grow. It is an issue of actually those who need to, I mean, can afford and should be able to afford. Meaning we have people like us have forgotten that there was anything like TDS. So it needs to, Yogendra Yadav refers to this, but I mean, obviously one film can't do all this, and it would probably become pedantic if it doesn't. है कि अगर ये नहीं होता है तो मतलब जो चीज़ आप 20 रुपए की है वो 100 रुपए में मिलेगी, तो it's going to affect everyone. Yes. Right, and it's already begun. You can see, you know, it's already happening. So जैसे ये लोग क्यों फसल खराब, you know, आपको टमाटर के 1 गैलन के लिए आपको 3 रुपया या मतलब एक वॉट एवर 50 पैसे भी नहीं मिलते हैं 1 किलो के लिए. And by the time we buy it here, we are paying like 40, 50, whatever. Correct. So it's already happening. आप लोगों का स्ट्रगल भी एक रिवोल्यूशन ही था और वाकई में ये हमारे लिए एसेट है एक तरह से कि आपने शुरुआत में कहा था कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं. एटलीस्ट ये जो भी था जैसा भी था बहुत ही अच्छा था. लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव कम टू नो. इतने सारे लोग तो पहली बात तो गलत हो नहीं सकते है ना, उनके इतने इंटेंशंस गलत हो नहीं सकते. वो आदमी जो रो करके कैमरे पे आकर के वो रोता रहता गाता है वो गलत नहीं हो सकता, ठीक है. या जो औरतें वो बैठी हैं वो उनके बारे में कितनी सारी बातें बोली गई हैं डिफेम करने के लिए, तो वो यार 1-2 आ सकता है, 10-20 आ सकता है, लेकिन 1 साल के लिए 13 महीने के लिए, और उसमें लिख रहा है कि करीब मतलब लाखों लोग आ रहे जा रहे हैं, वो पैसे से नहीं हो सकता. ये एक इमोशन है. और रही बात की एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टार्ट किया गया, फ्रेम को अपने स्टार्ट किया, तो होना भी चाहिए क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन पंजाब का ज़्यादा था, उसे हम डिसएग्री नहीं कर सकते. तो पंजाब में ज़्यादा कौन है, उनका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बावजूद जितने लीडर्स थे वो पॉइंट आउट कर रहे थे. आप भी कह रही हैं या और भी जो लोग उसमें पार्टिसिपेंट थे या हमारे जो आसपास के लोग, कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को दूर किया जा रहा था. हमारा जो गोल है, जो अचीवमेंट है, जो हमारा मोटो है, उसको हम अचीव करें, है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलाया जा रहा था. तो उसमें बोल रहा है कि देखो हम किससे लड़े, बारिश से लड़े, ठंडे से लड़े, बैरिकेड से लड़े, पुलिस से लड़े, हमारी सरकार से भी लड़ रहे हैं, हम मीडिया भी है, मीडिया से लड़ रहे हैं. भाई इतने सारे लोग लड़ रहे हैं, ये गलत कैसे हो सकते हैं. और आज़ादी के बाद शायद ये पहला रिवॉल्यूशन होगा इस तरह का. I just want to say thank you so much for the documentary.
documentary, as you mentioned before, that you are sort of tracking protests and activism. I think in a world where we live in like short-term attention span, this is an interesting protest to see how it has sustained itself. So I think it would be interesting to also see what sort of allows a protest to live and breathe in a space where we lose interest so quickly. Because this is also a slow film in a sense, in the sense it's when you think of a protest, you think कि कुछ ड्रामेटिक होने वाला है कुछ होगा, लेकिन इसमें तो रोजाना वाली चीजें रोटी बनी जा रही है, इट्स रिपेटिटिव, आप रोटी दिखा रहे हो बार बार, कितनी बारी रोटी दिखाओगे, ऐसे वही है. The bread is their weapon. That the fact that they can sustain themselves over there by not, some militant action, but actually by just cooking roti every day, that in itself speaks for something.